Welcome to Fountain Knowledge. Previous we studied Ascomycetes and their occurrence. Today we continue the topic and learned about phylogeny of Ascomycetes. There are two widely divergent lines of thought regarding the phylogeny of the Ascomycetes. The one proposed by Sachs in 1875 suggests Floridian ancestry of the Ascomycetes. Sachs' hypothesis of Ascomycetes evolution. Sachs pointed out similarities between the Ascomycetes and the red algae in the following aspects. Spermata produced in both the groups perform identical function. The development of receptive organ called trichogyne by the female reproductive structure. 3. Elaborate sexual process in both the groups. 4. Ascocarp and cysticarp are identical organs. 5. Continuity of cell-to-cell by cytoplasma connection in the thallus. 6. Growth and length of the somatic body of both the groups by the elongation and division of terminal cells. This line of thought failed to consider the physiology of the two groups, which is so different, to suggest that one cannot evolve from the other. The resemblances are due to parallel development, evolution of Ascomycetes according to de Bary. The other line of evolution proposed by de Bary in 1887 indicated the possibility of the derivation of the Ascomycetes from the Phycomycetes. The arguments in favor of his hypothesis are actually developed directly from the zygote. 2. Evolution of conidium from sporangium. These evidences are not strong enough to eliminate the possibility of a separate flagellate ancestry of the Ascomycetes. In the Ascomycetes, the somatic body is generally composed of septate hyphae, having a tendency to develop into an aggregate mass of mycelium, big 187, with a few exceptions where the vegetative body is unicellular uninucleate. In others, a series of cells remain adhering end-to-end to form a chain is known as pseudomycelium. Again, some other Ascomycetes are unicellular under certain conditions, but mycelial under others. Cells of the hyphae are usually uninucleate, but there are also members whose hyphae possess multinucleate cells. In some Ascomycetes, the hyphae become compactly aggregated to form a sclerotium, in which stage they tide over unfavorable climatic conditions. A short branch of one or two cells known as hypopodium place. Hypopodia may be developed on epiphytic mycelium. Hypopodia may be mucronate big 187b with pointed end or capitate big 187g having end rounded. They are of great taxonomic importance. फाउंटेन इल्म में खुशामदीद। पहले हमने एस्कोमाइसीट्स और उनकी मौजूदगी का मुतालिया किया था। आज हमने उस मौजू को जारी रखा और एस्कोमाइसीट्स के फाइलोजेनी के बारे में सीखा। एस्कोमाइसीट्स के फाइलोजेनी के बारे में सोच की दो वसी पैमाने पर मुख्तलिफ लाइनें हैं। 1875 में सैक्स की तरफ से तजवीज़ करता एक एस्कोमाइसीट्स के फिलोगेनी नस्ल की तजवीज़ करता है। साक्स हाइपोथेसिस ऑफ एस्कोमाइसीट्स। एवोल्यूशन। साक्स ने एस्कोमाइसीट्स और सुर्ख तहालिक के दरमियान मुंदरजा झेल पहलुओं में मुमासलत की निशानदाही की। दोनों गिरोहों में पैदा होने वाला स्पर्मेटिया एक जैसा काम करता है। ख्वातीन के तवलीदी ढांचे के जरिए ट्राइकोगाइन नामी याजा की नशोनुमा। 3
दोनों गिरोहों में जिनसी अमल की वजाहत करें। 4. आस्कोकार्प और सिस्टिकार्प एक जैसे एआज़ा हैं। 5. थील्स में साइटोप्लाज्म कनेक्शन के जरिए खलीए से खलीए का तसलसल। 6. टर्मिनल खलियों की लंबाई और तकसीम के जरिए दोनों गिरोहों के सोमाती जिस्म की लंबाई में इजाफा। सोच की ये लाइन दोनों गिरोहों की फिजियोलॉजी पर गौर करने में नाकाम रही, जो तजवीज़ करने के लिए इतना मुख्तलिफ है कि एक दूसरे से इत्तिफा नहीं कर सकता। मुमासलत मुतवाज़ी तरक्की की वजह से है। डी बेरी के मुताबिक अस्कोमाइसेट्स का इत्तिफा 1887 में डी बेरी की तरफ से तजवीज़ करदा इत्तिफा की दूसरी सतर ने फाइकोमाइसीट्स से अस्कोमाइसीट्स के अख्त होने के अमकान की निशानदाही की। उसके मफरूज़े के हक़ में दलाइल ये हैं: ASCI बराह रास्त ज़ायगोट से तैयार हवा। 2. स्पोरेंजियम से कॉनडम का इत्तिफा। ये शवाहिद इतने मजबूत नहीं हैं कि अस्कोमाइसीट्स के अलग फिलीजिलेट नस्ल के अमकान को खत्म कर सकी। अस्कोमाइसीट्स में सोमाती जिस्म आमतौर पर सेप्टेट हाइफी पर मुश्तमिल होता है, जिसमें